Back on the right stand with right stand exclusive on a seizure, ladies and gentlemen, an interception of perhaps what has been the biggest explosive seizures in Bengal, but it seems to have escaped a lot of people's notice. Let's get to that. Now, this happened in June 2022, nearly 11 months ago, after one of the biggest explosive seizures in the state of Bengal. The NIA now has arrested 2 more explosive suppliers in this entire case. The NIA has arrested 2 accused from Raniganj and Kolkata, who have been identified as Mirazuddin Ali Khan of Bokaro and Mir Mohammad Nuruzzaman of Birbhum. Now, while Mir Mohammad Nuruzzaman had supplied 27,000 kilograms of ammonium nitrate to Rintu SK, Mirazuddin Ali Khan now had supplied electric detonators and gelatine sticks to yet another accused. The NIA is now further conducting investigations to establish the sources of pilferage of the explosives and other bomb-making materials, including detonators and gelatine sticks, and this is an ongoing investigation 11 months after that seizure. Now, let us remind you what was recovered by the STF, the Special Task Force, in June 2022. They had recovered 81,000 detonators, 27,000 kilograms of ammonium nitrate, 1,625 kilograms of gelatine sticks, 2,325 electric detonators. Now, security analyst Major Surendra Punia and Major Manik M. Jali, security and geopolitical analysts, are with us. Namaste and Jai Hind, gentlemen. आप लोगों ने, you have pointed this out. Or it is shocking to me also that people did not realize the impact of what we are seeing and what has perhaps been intercepted or stopped. So, Surendra Punia ji, I want to start with you. 27,000 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट क्या ये कंस्ट्रक्शन के लिए यूज हो रहा था? किस चीज के लिए यूज हो सकता है? 81,000 डेटोनेटर्स। नरसिम्हन, सबसे पहले मैं आपको पर्सनली और आपके चैनल को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आपने इतना बड़ा नेशनल सिक्योरिटी का इशू आपने जिंदा रखा। बाकी जो मीडिया है वो ऐसे मुद्दों पे जहां देश की सुरक्षा सबसे ऊपर है, उसको लोग भूल गए हैं, शायद दूसरी चीजों में डिस्कशन हो रहा है। और ये इतना बड़ा मुद्दा है, और जो मैंने कल ट्वीट किया था उस पर जोरी सर ने उसके ऊपर लिखा था, और जिस ढंग से सर ने एक्सप्लेन किया था, आपको पता है कि 27,000 केजी अमोनियम नाइट्रेट का मतलब है 11,000 टीएनटी, और 11,000 टीएनटी का मतलब है 8,000 किलो आरडीएक्स। मतलब पुलवामा में सिर्फ 80 किलो से भी कम में ही मतलब वो इतना बड़ा ब्लास्ट हो गया था। तो इतने में कितने बड़े लेवल के ऊपर धमाके किए जा सकते हैं, मतलब पूरे बंगाल को फूंका जा सकता है। और ये तो नरसिम्हन सिर्फ मिला है, जो पकड़ा गया है, जो एनआईए की टीम ने पकड़ा है। और आपको पता भी होगा कि एनआईए की टीम कितनी छोटी है। अगर आप नेशनल लेवल पे देखें तो पुलिस की संख्या में उनके पास बहुत कम रिसोर्सेज हैं जी। अब ऐसा लग रहा है कि एनआईए को कम से कम 20,000 सोल्जर्स या ऑफिसर्स की जरूरत होगी, जो पूरे देश के अंदर जो नेक्सस बन गया है, जो जिहादी और जो अल्ट्रा लिबरल जो लेफ्टिस्ट हैं, जो चाइना के साथ, पाकिस्तान के साथ और फॉरेन एजेंसी जो हिंदुस्तान को डिस्टेबलाइज करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, वो बर्दाश्त नहीं कर सकते कि ये देश इकोनॉमिक डेवलपमेंट के उस रास्ते पे निकल पड़ा है जहां पे चाइना, यूएस, यूके, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान सबको चुनौती दे रहा है, और ये लोगों को डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। और इस देश में कुछ जगह हमारे कुछ लूप होल्स हैं, जो एक सेकुलरिज्म नाम का जो कीड़ा है, ये इतना बड़ा हो चुका आनंद, ये इस देश को एक दिन फिर तोड़ के मानेगा बंगाल में। और ऊपर से आपने एक चीज मैं और बोलूंगा, फिर आप सबके पास जाइएगा, कि मुझे शर्म आती है कि इस देश में इस टाइप के चीफ मिनिस्टर हैं। सिटिंग सीएम बंगाल के ममता बनर्जी ये कह रही हैं कि ये लोग, और आरजेडी के एमएलए कह रहे हैं कि इन लोगों को बम इसलिए बनाने पड़ रहे हैं अपनी आत्मरक्षा के लिए। भाई साहब, इस देश में 26 करोड़ मुस्लिम लोग हैं, किसी की जान को कुछ हुआ है क्या? कल को फिर ये और ऊपर से ये भी कह रहे हैं कि उनके एरिया में आप किस लिए जाते हो। भाई, किसका एरिया? ये देश तो पूरे 150 करोड़ लोगों का है। कल को फिर हमें ये कहेंगे कि अगर मुस्लिम एरिया में जाना है तो अपना सिर घर पे रख के चले जाइए, अपना हाथ घर पे रख के चले जाइए।
क्या हो रहा है देश के अंदर? देखिए, आपने पॉलिटिकल ये कवर फायर, पॉलिटिकल कवर फायर गुलदस्ता बनाने के लिए थोड़ा ना तैयार किए जा रहे थे। पॉलिटिकल कवर फायर की भी आप बात कर रहे हैं मेजर पुनिया, बट आई वांट टू गो टू मेजर मानिक जॉली एंड अंडरस्टैंड हाउ can such small suppliers, how can they get so much of ammunition in or so much of chemicals in which can be used for making explosives? Is this necessarily a terror nexus, or could this be for mining, for construction? Because a lot of people say gelatin is used for mining, for construction. Why are you making such a big deal about it? Why is it a big deal? I'm just trying to play the counter or the devil's advocate here to say there are others who are saying it's not established. How do we know they are part of any terror network? How do we know that they were going to use this for disrupting society or for orchestrating, massive or series of serial blasts or terror attacks? Major Jolly, thank you for your patience. Thank you, Anand, for inviting me to your show. And thing is, it is definitely unlawful activity, because anything that it can be so ammonium nitrate can be used for a lot of reasons, but wherever it would be used for legal activities, it would be under some inventory, registered under some company. It would be lying in their warehouses. So NIA won't have to raid and capture it with help of local police and all. So this was out of that scope, and hence because the recovery was made. The most important thing, and yes, yesterday I tweeted some of the mathematics of it, that the amount of ammonium nitrate caused is more or less in such a large quantity, the way we saw in Beirut when it exploded and it caused an earthquake to the size of 3 to 4 Richter scale. And because it is being caught with 81,000 detonators, it means there is a scope of it being turned into small country bombs, pipe bombs, IEDs and all. And if you break down, as Punia sir brought out, that this is actually almost 8,000 RDX explosion capability, and Pulwama was only 80 kgs. So, if you break them down into smaller pieces of bombs and place them all around the countryside, you can have actually a state police running helter-skelter just to figure out what is happening. It is not the quantum of casualties that these small bombs cause. It's the chaos they cause in the system. And that is, I think, the bigger intention here, apart from the casualties it caused. And as far as, getting them into the system is concerned, we've seen for a couple of years, Bengal is turning into a place which is, a cesspool of lawlessness and crime and political vendetta, the post-election violence and all that. We've seen it all. So this is the time actually government should start taking it seriously. And if I won't go to the extent of saying, because I'm not the authority on that the state government is complicit, but they're definitely complicit about it. And it is still part of country. I mean, you are seeing another Kashmir getting turned into. So why doesn't the government step in and take control of the situation? Right. Now, we've got a media report, and although News18 has not yet confirmed this, I'm just citing media. It's a media report, and it's out there saying that one of the two people detained has been identified as Mir Mohammad Nuruzzaman, who the NIA alleges worked as a contract worker in the IT department of West Bengal's Education Ministry in Bikash Bhavan. Now, there is no need to draw linkages for anything, because people can work anywhere and they can be doing something, and he was a contract worker, he was not even directly involved. But these people are getting into places where they have connect. It also shows that they are highly educated and highly informed. They know exactly what they are doing. So this threat, this danger is very clear and present. Major Johnny, final word. I have limited time. Yes. Yeah, so the final word is, as I mean, you can say the Nexus has gone deep into, it's very well trenched in, where it doesn't matter where you are working or what you are doing. The connection is so solid that they've been able to amass such high level of explosives. And it means they are very well connected to the people who are supplying it. This could very well be cross-border, like all other troubled states that we have Northeast Kashmir, when we had in Punjab. This is a border state too, and it has pretty porous border. Bangladesh and things can easily come out from Myanmar also. So that cannot be ruled out, but I would just like to fortify on the fact that you said that there is no linkage to somebody working in IT department and having 27,000 kgs of ammonium nitrate. This is definitely a plan for something much bigger, and I do hope that government pays much attention to it because before it goes out of hand. Thank you. Final 30 seconds, Major Punia. क्या जिस तरह से साक्ष्य सामने आ रहे हैं वो पॉइंट करते हैं कि ये तार कहीं ना कहीं जुड़ रहे हैं उन ताकतों से जो कि
कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं? आनंद, इसके सिर्फ दो ही मकसद हैं जी। पश्चिम बंगाल या केरल, हिंदुस्तान का जो अगला कश्मीर बनने वाला है वो प्रोसीजर शुरू हो चुका है। वो आप खुद भी देख रहे हैं कि 1920 में जिन्ना ने एक नारा लगाया था कि कराची और लाहौर के अंदर से हिंदू जगह खाली कर दें, रामनवमी नहीं होगी, दशहरा नहीं होगा, दुर्गा पूजा नहीं होगी, सरस्वती पूजा नहीं होगी, और ठीक 27 साल बाद में पाकिस्तान बन गया। आज बंगाल में और केरल में बिल्कुल ठीक वही हो रहा है। और इनका मकसद सिर्फ ये था कि जो वहां पे गरीब, जो मतलब मजदूर किस्म के जो हिंदू हैं या बहुत गरीब हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, वो जो रोजी रोटी के लिए लड़ रहे हैं, कि उनको इतना डराओ धमकाओ कि वो जगह खाली कर दें और उसके ऊपर इन लोगों का कब्जा हो जाए और पूरा लॉ एंड ऑर्डर, गरीब आदमी कब तक रोटी के लिए लड़े या पुलिस के पास जाए। और पुलिस, ममता सरकार खुद वो गृह मंत्री हैं, जबकि वो खुद अपने मुंह से बोल रही हैं कि आप रामनवमी का जुलूस मुस्लिम इलाकों में से क्यों लेके जाते हैं? भैया सड़क सबकी है। अरे आप आनंद, मैं 1 मिनट लूंगा आपका प्लीज, ये बहुत जरूरी है। एक चीज बताइए आप, ये पूरे देश को सोचना होगा कि कभी ईद पे कभी दंगे हुए नहीं, कभी बकरीद पे हुए नहीं, कभी मुहर्रम पे हुए नहीं, कभी पुलिस लगी नहीं। सभी एरिया में से जाइए, हिंदुओं के, सिखों के, क्रिश्चियन, सभी में जाइए। लेकिन इस देश में बहुसंख्यक हिंदू हैं, उनके त्योहार पे पुलिस लगती है, जाब्ता लगता है, परमिशन नहीं मिलती है, हमला होता है। क्यों हो रहा है? ये बहुत बड़ा सवाल है। ये और ये आप लोगों को उठाना होगा। देखिए, राष्ट्रीय एकता, देखिए ये प्रश्न देखिए लेफ्ट टू देमसेल्व्स, बंगाल का अगर आप सब पे छोड़ दें, अगर आप समाज को छोड़ दें तो समाज सब कुछ अपने आप होने भी दे सकता है। देखिए बॉम्ब कभी किसी के इसको देखकर नहीं देखता, गरीब गरीब होता है, जान सबकी जाती है, जब जाता है, जब जान लेने जाता है तो वो सबके लेता है, वो दीन धर्म देखकर नहीं लेता। वो it will kill innocents, it will kill people across the board. People who are resorting to this, what their machinations are, we got to get to the bottom of that and we got to weed that out of society. आप ये करना, ये मैं इसीलिए आप दोनों को, इसीलिए आपसे बात कर रहा हूँ, because this has to come to the front, it has to come into consciousness and we got to actively start countering this. Thank you very much. मेरे पास समय अल्प है इसीलिए, but we look forward to more conversations. Thank you very much, Major Punia and also Major Jolly. Thank you very much.